Guys, came to welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. So सबसे पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई सो दैट काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. इट्स फ्री फ्री फ्री. So yes, in today's video I'm going to create this look only using products under 500 rupees. Yes, you heard that right. Only using products under 500 rupees. Okay, so when I mean affordable, I just don't mean that कि सिर्फ pricing में affordable. It should be in a good quality. It should apply on your skin beautifully, because after all I'm going to apply on my skin and I really don't want that something harm my skin. So I see that first, and after that I see price. This video, whatever products I'm going to use will be under 500 rupees. And if you find this products on sale, that is win-win situation for you. And I must say, if you are going to buy makeup, then please buy on sale, because why to waste money? आप पूरा पैसा देके वो चीज़ ले सकते हो और आप 50% ऑफ में भी ले सकते हो. So yes, without wasting much time, let's get into the video. Okay, so let's start with the primer. I'm using this Insight 3-in-1 primer. Okay, this have like silicone base, so it's perfect for summer and suitable for all skin types. Already applied moisturizer. I applied that Pond's moisturizer. You can apply any moisturizer that suits your skin. Okay, so for foundation, without any doubt, my favorite Maybelline Fit Me Matte Plus Polish foundation. I forgot any name or any shade, my shade name, तो मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, so don't forget to check that out. So I apply foundation like this, and this makes my work really easily, so I do like this. This is really beautiful foundation. I really don't need to explain more about this foundation because I already done literally many times. So this foundation is buildable, so if you want full coverage, then you can build it as your requirement. Okay, so for concealer, my recent favorite Swiss Beauty liquid concealer. This is like really beautiful concealer. This is in my favorite list, like recently add हुआ है क्योंकि I bought recently. क्या बोल रही हूँ मैं? Okay, so can you see this concealer is blending really beautiful in my skin. And I know this don't have really variety number of shades. This have only 6 shades. So if you find your shade, then I suggest you to go for this concealer, because this is really beautiful concealer and really affordable. Today I'm going for eyeshadow, and I don't use any eyeshadow primer. I just use concealer. So to set my face, I am using this Fit Me Compact Powder. You can just say by this only that I love this foundation, because I already hit the pan, and I really like when I hit the pan, because वो ना एक satisfaction मिलता है कि हाँ मैंने वो product का पूरा पैसा वसूल किया है. Okay, so for brows I am using this Wet n Wild brow pencil. This is the first pencil I ever use. मतलब मैंने ये सबसे पहली आईब्रो पेंसिल थी जो मैंने बाय की थी. एंड यू कैन सी एट मेरे पास थोड़ा सा ही. आई होप कि मैं थोड़ा सा भी कर पाऊँ. हाँ प्रोडक्ट है थोड़ा सा, तो चल जाएगा आज के दिन के लिए. जिस फिल को अलग से स्कूली कैरी करने की वो झंझट भी नहीं होती है. Can you see how brows can just change your look? Okay, so let's get to the eyeshadow. I'm using this Swiss Beauty eyeshadow palette. I just felt in love with this palette. This is really beautiful and of course really affordable. In this eyeshadow, and you can see how pigmented is this. And I am applying in my crease, so it gives me a beautiful transition color.
really good for beginners because A, it is affordable and B, you don't have to work too much to blend this. बस चले ना तो सिर्फ मैं ये एक ही कलर से अपना पूरा आई शेडो ख़त्म कर दूँ, बिकॉज दिस डेज आई एम एन्जॉइंग वन कलर आई शेडो. सो शायद मैं आज भी एक ही कलर लगाऊँ. नहीं, आज I should apply two colors. Okay, so I'm taking this eyeshadow to apply on my lids. So yes, my eyeshadow is done. Okay, lower lash line और सब बाकी, but can you see how effortlessly I have done this eyeshadow? Okay, so before doing my lower lash line, I'm going with this kajal. This is Maybelline kajal. I am sure कि ये तो ना सबकी वैनिटी में मिल जाएगा, because this is like काजल और लिपस्टिक ना सबके पास मिल जाता है. माई मॉम यूज टू कीप दिस काजल इन हर पर्स और इन हर वैनिटी. सो मैं ना जब वो बैंक जाते थे तो मैं ना चुरा के उन ये काजल लगाती थी और फिर मैं ना ऐसे पानी से वॉश करने का ट्राई करती थी. आई यूज टू लुक लाइक पांडा. में भी तो पूरा काला काला हो जाता था और फिर मम्मी को पता चल जाता था कि मैंने ना उनकी वैनिटी में से काजल निकाली. एंड शी वॉज लाइक, why you do this? Okay, so if you are a beginner then try to do like this, because मुझे तो आदत है रोज करने की. so I do like this. This comes really natural to me because I am doing this for since so many years. because मैं स्कूल में भी the only makeup product I used to use was काजल, because वही अलाउड था हमारे स्कूल में, कुछ अलाउड नहीं था. Even tinted lip balm was not allowed in my school. So always make sure to blend your kajal with your lower lash line eyeshadow, because वो बहुत गंदा लगता है अगर वो blend नहीं होता है तो. Okay, so for mascara I am using this Maybelline mascara, another iconic product from Maybelline, because ये भी almost सबके पास होता है. In affordable mascara this is my favorite. और थोड़ा सा expensive में जाओ then K Beauty is my favorite. But under 500 rupees this is really good. Should I go with my falsies or just keep it like this only? I am confused. क्या करूँ? I should keep it like this only because this is also looking really beautiful. Okay, so to contour my face, I really don't have any contour that is under 500 rupees. So आज हम एक जुगाड़ करेंगे. आई शेडो लेंगे और जो ये कूल टोन ब्राउन कलर है उसे हम हमारा कॉन्टोर की तरह यूज़ कर लेंगे, बिकॉज दिस आई शेडो ब्लेंड्स रियली ब्यूटीफुली. सो कॉन्टोर में भी वो अच्छा ब्लेंड हो जाएगा. कॉन्टोर ब्रश एंड आई एम ऑल्सो डस्टिंग बिकॉज दिस इज रियली पिगमेंटेड. yes, this is working as a contour. सो अगर आपके पास ऐसा कुछ ना हो देन एक ही प्रोडक्ट में से ऐसे जुगाड़ निकाल लेने का. सो नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट विथ माई बिगर कॉन्टोर ब्रश. दिस इज़ रियली सस्ता जुगाड़ जो मैंने आज किया है. आई शुड यूज़ दिस मोर ऑफन. फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस स्टे करकी ब्लश. दिस इज़ रियली अफोर्डेबल एंड आई शुड मस्ट टेल दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल कलर. I know this is quite dark for me, but these days I am enjoying like applying different kind of blushes, so I don't mind using like thoda sa dark. Okay, to highlight my face I am using this Wet n Wild Mega Glow highlighter. This is really beautiful highlighter. This is that blinding highlighter. Let me show you why I am doing that blending wala thing, because this is really good. Can you see how beautiful this blends into your skin? I really don't know what is the connection between me and highlighters. I really just love highlighters. I'm using this same highlighter
to highlight my brow bone. Where थोड़े टाइम पहले I just stopped doing my inner corners, but I just अरे यार ये मक्खी. Please to set everything, I'm using this Swiss Beauty makeup fixer. For lips, I'm not going with any lipstick. Today I'm going with this Nykaa Lips Don't Lie lip liner in the shade Pillow Fight. This is really beautiful liner. And doing liners is really fun way. I should keep my mouth shut. First let me do my liner, then I will be right back. So applying liners as a lipstick is really good way because this lasts really long. और मुझे ना अभी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आई एम वेयरिंग एनीथिंग ऑन माई लिप्स. मतलब लिप लाइनर इतनी लगाई है फिर भी आई डोंट फील एनीथिंग ऑन माई लिप्स. सो इट इज़ रियली लाइट वेट. सो वो ना ऐसा थोड़ा हैवी फील भी नहीं होता. एंड दिस लुक्स रियली अमेजिंग. और ये जो शेड है पिलो फाइट, ऐसा कोई शेड मेरे पास लिपस्टिक में नहीं है. सो आई रियली लाइक दिस लाइनर. I really enjoyed doing this makeup look because वो जो रेगुलर मेकअप लुक्स होता है ना उसमें मुझे कोई जैसा दिमाग नहीं चलाना पड़ता. बट फॉर स्पेसिफिक दिस आई हैव टू कीप इन माइंड दैट कि हाँ 500 रुपये से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए. सो आई लाइक टू गो फॉर दैट, वो अपनी वैनिटी में से ढूंढने का. और कभी कभार तो ऐसी चीज़ों से पता चलता है कि यार मेरे पास ये है, आई हैवेंट यूज दिस इन सो लॉन्ग. सो I really enjoyed doing this type of tutorials. So yes, let me know कि आपको under 300 भी देखना है कि नहीं. Under 1000 भी I can do, under 2000 भी I can do. Just leave your suggestion कि आपको और कैसे budget videos देखने हैं. I would love to make videos for you guys. Please leave your suggestion in the comment section below. I hope you enjoyed watching this video. Please do subscribe if you are new here. And yes, I will meet you in my next video. Bye bye.